ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Dear brothers and sisters in Islam, today we gather here in a grand procession to celebrate the noble birth of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is a day of immense significance, marked by the miracles that amaze the world to this day. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, extraordinary events unfolded. The idols trembled and the minarets of distant palaces crumbled, signifying the momentous arrival of the chosen one. It was a day centered with joy, happiness and hope, a day when the darkness of ignorance began to fade. It was the day when only iblis cried. We must express our profound gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to be a part of the ummah of the best of all creation, who came to us as a mercy to mankind. He guided an era of truth, peace and justice. His teachings emphasized compassion, forgiveness and equality. Today, as we celebrate this momentous occasion, let us not simply rejoice in the past, but reflect on the timeless lessons he left for us. Let us remember that being a true Muslim means embracing these teachings in our daily lives. Let us strive to be compassionate and forgiving, to stand up for justice and equality, and to extend a hand of brotherhood to all. By following the blessed Sunnah, not just in name but in spirit, we can strengthen our faith. So as we walk in the procession today, let it be a symbolic journey towards the path illuminated by the Holy Prophet alayhi salatu wassalam. Let us carry his message of love, peace and equality in our hearts and actions, for that is the true way to honor his noble birth. May Allah subhanahu wa ta'ala's blessings be upon us all here today. Ameen. Thumma ameen. Jazakumullah. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद। ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद रफाकत हुसैन शाह साहब, पीर सैयद रफाकत हुसैन शाह साहब, पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब, पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद हैदर शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद हैदर शाह साहब, पीर सैयद हसनात शाह साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा
need to run. Okay, I'm going. Okay, okay. Go, yeah? Okay. I'm going. Ready if you need me. I need to run. Okay. Okay. I'm here now. इसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, 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 है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिनके तलवों का धोवन है आब हयात, 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 है वो जान मसीहा हमारा नबी। Okay, I'm going. ومولانا محمد
Dear brothers and sisters in Islam, as we approach Road Street over here, the lovers of Rasulullah alayhi salatu wasalam are expressing their love for the holy procession and the noble birth of the Prophet alayhi salatu wasalam. In this grand Eid Miladun Nabi holy procession and the grand annual Julus of Halifax, the family of Chaudhry Nawaz Marhum Sahib, Rahmatullahi Ta'ala alayh, are providing drinks and istiqbal for the holy procession of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam. Our dua is, may Allah subhanahu wa ta'ala accept the love of all the lovers of Rasulullah alayhi salatu wasalam, accept everyone's efforts here today, and in particular, may Allah subhanahu wa ta'ala elevate the ranks of Chaudhry Nawaz Marhum wa Maghfoor. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannatul Firdaus and allow the children to follow in his pious footsteps and keep expressing their love for Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wa salam. Ameen, summa ameen. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Risalat, Narae Haidari, Jashn Eid Miladun Nabi, Ahmad Mustafa. Get my shots out if you can, because they're eating food. Ahmad Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Live. I'm moving the car. Their contributions greatly advanced this institution's mission, while Haji Mahfouz Sahiba
and her sisters have exemplified love and devotion. Their hospitality during the annual Julus is a testament to their loyalty and care. Our prayers are offered for their continued health. Haji Mahmood Sahiba has undergone an operation. We pray may Allah grant her a long and healthy life, both spiritually, materially, and grant them success in both the worlds. आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह इज़्ज़त में कबूल और मंजूर फरमाए और जो हुजूर की आमद पर इसका खुशियां मनाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों को साला साल अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए और इनकी तमाम नेक दिली दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह। My dear brothers and sisters in Islam, the lovers of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam are expressing their love for the noble Prophet alayhi salatu wasalam and his birth. In the town of Halifax, here on Road Street, we have the household of Haji Mahmood Sahib, rahmatullahi ta'ala alayh, who are giving the holy procession a very warm welcome, providing drinks and food. We make dua for the household of Haji Mahmood rahmatullahi ta'ala alayh, that may Allah subhanahu wa ta'ala bless them in abundance and accept their love and efforts for the Holy Prophet. Peace and blessings be upon him and his family. We make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala elevate the ranks
of Haji Mahmood Rahmatullahi Ta'ala alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him a high place in Jannatul Firdaus and allow his offspring, allow his children to follow in his pious footsteps and express their love for the Holy Prophet alayhi salatu wa salam. Ameen. Thumma ameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. मुझे कौन है giving the holy procession of the Mawlid a warm welcome with love. In particular, Bilawal Meat Store and Bilawal Superstore as well as New Dixie. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Haji Shabir Sahib and Haji Nazir Sahib and Haji Wasim Sahib, Haji Tahir Sahib, Haji Nadeem Sahib for expressing their love for the noble Prophet alayhi salatu wasalam. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the ranks of Master Adalat Marhum Rahmatullahi ta'ala alayhi as well and bless the family in abundance and allow them to follow in his pious footsteps. May Allah subhanahu wa ta'ala also elevate the ranks of Sheikh Sahib Marhum Rahmatullahi ta'ala alayhi, who every year express their love for the noble Prophet alayhi salatu wasalam and his whole family. We make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless the community of Halifax and allow the Sunni Muslims of Halifax to rejoice annually with love and compassion. Ameen. Summa ameen. Then. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله सारे बड़ा दरूद अज सरकार आ गए दुनिया मुख्तार आ गए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि
हज़रात गिरामी, यहाँ पर हाजी अजायब साहब मरहूम मगफूर के अहले खाना की तरफ से जुलूस का इस्तकबाल किया जा रहा है और तबर्रुक पेश किया जा रहा है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हाजी अजायब साहब मरहूम मगफूर की कब्र पर करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हाजी अजायब साहब मरहूम हमारे बड़े की जानिसार और वफादार साथी थे, जिनकी आज गैर हाजिर शिद्दत से महसूस की जा रही है। हाजी अजायब साहब मरहूम मगफूर was a beacon of devotion who left an indelible mark on our community. His unwavering presence at the mosque 5 times a day showcased his steadfast faith and commitment. He was a true symbol of unity and he demonstrated the power of community and community. Though he is no longer with us, his legacy lives on, inspiring Haji Ajaib memory is the guiding light and guiding No idea. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allah.
हजरत गिरामी, यहाँ पर शुरकाए जुलूस का चौधरी मोहम्मद सगीर साहब कश्मीर फाउंडेशन वालों के अहले खाना की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला चौधरी सगीर साहब की उम्र में और सेहत में मजीद बरकत अता फरमाए। हजरत गिरामी, थोड़ी ही देर पहले यहाँ इसी मस्जिद में नमाज जनाजा हजरत जनाब हाजी बाऊ सादक साहब मरहूम मकबूल, जो कि हमारे इंतहाई जानिसाब और वफादार साथी थे, उनकी अहलिया की नमाज जनाजा अदा की गई है। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मिल फरमा दे और माई साहबा मरहूमा की बुलंदी दराजात की दुआ भी करे। Yeah, it's all about the drone, you know, it's all about the drone. What am I if I'm recording on this? It doesn't show me if I'm recording. जनाब हाजी बाऊ साहब नमाज जनाजा अदा की गई। या अल्लाह उस इस्लाम के तहत मजबूर फरमा, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, सर्व सर्व पर रहमतों की बरसात फरमा, उनकी कब्र से हद निजात तक वसीयत कुशादा फरमा, हुजूर नबी करीम की शफाअत कुबरा जीवन नसीब फरमा, उनको जन्नत के फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। सल्मान खान व अहले खानदान व जमील सल्मान को सब्र जमील व अजर अजीम व खैर कसीर अता फरमा। या अल्लाह चौधरी मोहम्मद सगीर साहब जिन्होंने जुलूस का इस्तकबाल किया, इस तवज्जो को पेश किया, इनकी भी सेहत में मजीद बरकत अता फरमा, उनका साया अहले खाना पर ताबीर दानिश फरमा। या अल्लाह महबूब की आमद पर खुशियां मनाते हुए उनके घर में सारा साल अपने रहमत से मालामाल फरमा, तमाम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबीका मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह बरलो करम दुनिया का मंगते हो, बरलो करम Now. This, yeah, that's it. Okay. Dear brothers and sisters in Islam, the Sunni Muslims of Halifax are rejoicing upon the noble birth of Sayyidina Muhammad
Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. As we have come on to Jimmy's street of Halifax, there you go, you can go now. Sunni Muslims are rejoicing and we are being received with a warm welcome by Haji Rab Nawaz Sahib and Karwan Al-Madina. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their love and efforts in favor of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wa salam. Haji Rab Nawaz Sahib has also been blessed in the holy month of Rabiul Awwal with a baby boy. I will make dua. Haji Rab Nawaz Sahib have been blessed with a grandson in the month of Rabiul Awwal. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and allow him to be a true Ashiqi Rasul, following the footsteps of his forefathers and his elders and expressing his love annually in the month of Rabiul Awwal. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him a very long life upon the Quran and Sunnah and in the love of the Ahlul Bayt. Ameen. Summa Ameen. Narae Takbir. What camera am I? Narae Risalat. Narae Risalat. Narae Haidari. Jashn Eid Miladun Nabi. Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa. What camera is it on? Okay. Count three, yeah? I'm just gonna stay here. Make sure you get my shots there. Yeah. Here you go. I'm tired. I'm not ready. They're buzzing you are.
I'm getting ready. Just my tripod thing. It's going a bit bent. You can use me if you want. Can I move? Can I move? Okay. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to keep and loving Rasul Kareem alayhi salatu wasalam and allow us to live our lives in accordance to the teaching of the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. As I mentioned once again, Dynamic Motor Company and Nasif Bakers are giving the Holy Procession a warm welcome. We make dua for them. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them in abundance further. Ameen. Thumma ameen. Let this up. Let this up. तुम भी करके उनका चर्चा अपने अपने दिल चमकाओ
झंडा अजमत वाला नबी का झंडा रिफअत वाला नबी का झंडा प्यारा प्यारा नबी का झंडा सब रंग वाला नबी का झंडा हर घर पर लहराओ You can use my shot if you need to. Okay. Here we go.
has given us His blessed Prophet Muhammad, peace be upon him, who is a symbol of peace and humanity, leader of mankind who laid the golden principles which could lead a follower to his destiny. This is the celebration of the splendid birthday of the Savior of mankind who gave us Islam, religion of spiritualism, ethics and love, religion of guidance, champion of equality and truthfulness. Islam is the Christian religion because true benefits worldwide. Today, I would like to thank all the students and management of Parkinson Lane Primary School on behalf of Al-Jamatul Zahra Mosque and my respectable late father, Professor P. Sayyid Ahmad Hussain Shah Tirmidhi, for welcoming us all and making this a joyful experience as always. We would like to thank Head Teacher Ruzi Ahmad and his staff, who every year create such a warm and welcoming reception whilst distributing sweets and singing praises of the Holy Prophet, peace be upon him. We pray that may Allah the Almighty grant Mr. Ahmad and his staff success in all areas. May these children be blessed and become the pride of Halifax. And may Allah bless you, bestow grace on you all, and may you all have a successful and bright future. Ameen. Allah, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu. Amina bibi ke gulshan mein aayi hai taza bahar, padhte hain sallallahu Take my shot as well. Switch it. Nabiji, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu. बारह रबीउल अव्वल को आया दूर यतीम, बारह रबीउल अव्वल को आया दूर यतीम। माह नबूवत मेहर रिसालत साहिब खुल्क अज़ीम, नबी जी अल्लाह, अल्लाह, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu. Hamid Mahmud का सरदार, हामिद महमूद और मोहम्मद दो जग का सरदार, जान से प्यारा राज दुलारा रहमत की सरकार, नबी जी अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illahu. अव्वल आखिर सब कुछ जाने देख बहीदों का
करीब गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी Yeah, I'm going now. I'm going to the Bimin now, yeah. That's where I was going. You can do this next year. Yeah, I'm a bit busy at the moment. Woo. So am I. I'm going to stay here. I'm going to stay on the roundabout. As we have approached the bottom of Parkinson Lane, we have been received with a warm welcome by Auntie Zubeda Sahiba,
who have shown and expressed their love for Rasul Kareem alayhi salatu wassalam. We make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala accept everyone's efforts and guide everyone to the Quran and Sunnah. Ameen. Summa Ameen. उसके घोड़े पे है हुसैन नजारा, कान्हरी घोड़े पे है हुसैन नजारा, अली कान्हरी घोड़े पे है हुसैन Get my shot if you can. अरे तुझ पर करम नसीर ये सारा, अली का है तुझ पर करम नसीर ये सारा, अली का है। Why not my camera? I need to run back to the bus now. Huh? Is it? Okay, I'm going in. I'm over, yeah, I'm going now, yeah. Yeah. Let me try this. Miss the trick. Harun, when they get to the dars, make sure you get a good shot, yeah? I'm not making time. Are requested to join in and send salutations. Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Habib Salam Alayka, Salam
alayka. When I close my eyes eternally, may your vision be my company. No, it is fine. Even though I'm far from worthy, but I'm blessed to be your ummati. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, I'm going. Ya Nabi, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Rum, don't forget the smoke grenades as well in the tower after that. My dear brothers and respected elders, all the participants, all the volunteers, council members, and all the esteemed ulama kiram, on behalf of Shah Walai Foundation, on behalf of Al Jamiatul Zahra Halifax, and on behalf of my late father, Hazrat Professor P. Sayyid Ahmad Hussain Shah Sahab Tirmidhi, Rahmatullahi Ta'ala alayh, I extend my deepest gratitude to everyone who participated in and contributed to the success of this blessed procession, to our volunteers,
all our men and women who have worked day and night with unwavering dedication. Your efforts have truly been the backbone of this event. We are profoundly grateful for your commitment. A special acknowledgement goes to our esteemed ulama, to my uncle, P. Sayyid Rafaqat Hussain Shah Sahib Tirmidhi, who came from Italy, P. Sayyid Shaukat Ali Shah Sahib Gujarati, who came from Pakistan, and in particular, a special acknowledgement and thanks goes to the custodian of the holy shrine of Amir-e-Millat Muhaddis Ali Puri, Hazrat Mehrul Millat, Janasheen Amir-e-Millat, Peer Sayyid Munawwar Hussain Shah Sahib Jamati. Despite being ill, they have blessed us with their presence and guided us throughout the holy procession. Their guidance, wisdom and spiritual leadership have been a source of strength for us all. My dear brothers, I cannot express my heartfelt thanks to Qibla Peer Sahib. They are not just an ordinary person, but they are a lion of Ahlul Sunnah. They are Janasheen, the successor of Amir-e-Millat. They are the hero of Ahlul Sunnah. They are pride of the nation. They are pride of Sayyida Fatimatul Zahra Salamullahi alayha. My dear brothers, Hazrat Qibla Peer Sahib, just like their forefathers, have chased the enemies of Islam. They have chased the enemies of Sayyida Fatimatul Zahra Salamullahi alayha with great courage and resolve. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses Hazrat Qibla Peer Sahib abundantly for their noble efforts and continues to grant them great health and they grant them strength in their mission. Once again, I would like to thank each and every single volunteer, every participant who has blessed us or contributed to the success of this holy procession. And lastly, I would like to request Hazrat Qibla Peer Sahib to make a dua for me and my family, for my mother and for my late father, Hazrat Qibla Peer Sayyid Ahmad Hussain Shah Sahib Tirmidhi Rahmatullahi Ta'ala alayh, and pray for my maternal and paternal grandparents, and in particular pray for my uncle Peer Sayyid Basharat Hussain Shah Sahib Tirmidhi Rahmatullahi Ta'ala alayh, who passed away in Madinatul Munawwara while reciting Durood Salam only a fortnight ago. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate their ranks in Jannah, grant them a high place in Jannatul Firdaus. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Haidari, Jashne Eid Milad. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ پاک ہمارے آج کے جلوس کو اپنی بارگاہ میں شرف پوری طاقت پانا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا مقبول و مقبول پانا. اور یا اللہ پاک اس جلوس میں جتنے بھی احباب شریک ہوئے اور بالخصوص سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی کی اہلیہ کی قیادت میں اور ان کی بچیوں کی سیادت میں جتنی بھی مائیاں بہنیں شریک ہوں یا اللہ پاک ان سب کی حاضری کو مقبول و منظور پاک، سب کو اجر کثیر اور برکت نصیب پانا، سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال پانا. یا اللہ پاک جن جن احباب نے آج کے جلوس کے سلسلہ میں دام دل میں قدم سکھنے حصہ میں لایا، جانی مالی بدنی طور پر تعاون کیا، جس طریقے سے بھی یا اللہ پاک حضور کے جلوس کی خوشی میں اپنی خدمت پیش کی، مولا کریم ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پا کے اجر کثیر اور برکت نصیب پانا. پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی کے درجات میں بلندی فرمانا، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمانا. یا اللہ پاک ان کے خاندان کے دیگر جملہ افراد بالخصوص شہنشاہ ولایت اور ان کے والد گرامی کے درجات میں بلندی فرمانا، اعلیٰ علیین مقام عطا فرمانا. یا اللہ پاک سید بشارت حسین شاہ صاحب کی بخشش و مغفرت پانا، درجات میں بلندی فرمانا اور اعلیٰ علیین مقام عطا فرمانا. یا اللہ پاک پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب، سید رفاقت حسین شاہ صاحب جو کہ بالخصوص
पाकिस्तान से और इटली से आज के इस जुलूस के लिए आए मौला करीम, उनका आना मकबूल व मंजूर पाके, उनको अजर कसीर और बरकत नसीब पाना। या अल्लाह पाक सैयद पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी के सारजादगान, या अल्लाह पाक सैयद अली हैदर हुसैन शाह साहब और सनात शाह साहब, इनकी उम्रों में और सेहत में और फैज़ में बरकत अता पाना। या अल्लाह पाक इनकी वालदा का साया ता देर इनके सरों पर कायम दायम फरमाना और इनकी हमशीरगान को या अल्लाह पाक बरकत अता पाना और उनकी जुमला नेक जात मकबूल व मंजूर पाना। जितनी भी बीबियों ने शिरकत की या अल्लाह पाक उन तमाम की हाजिरी को मकबूल व मंजूर पा के उन सब की को अजर कसीर और बरकत नसीब पाना। और रास्ते में जुलूस के जिन अहबाब ने खिदमात पेश की और जुलूस को वेलकम किया, मौला करीम उन तमाम को बरकत अता पाना, उनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता पाना। उनके जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए या अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत पाना और उनके दर्जात पे बुलंदी फरमाना, आला इल्लिय्यीन मकाम अता पाना। या अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सालमियत अता फरमाना, नेक साले ईमानदार गैरतमंद क़यादत नसीब पाना और कश्मीर और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खास फज़ल व करम फरमाना। या अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की यह भी मदद फरमाना। और जिन अहबाब ने पीर भाइयों ने टेलीफोन करके मुख्तलिफ मुल्कों से और मुख्तलिफ शहरों से और पाकिस्तान भर से दुआओं की दरख्वास्त की, या अल्लाह पाक आज के जुलूस के सदक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से या अल्लाह पाक उन सब की जुमला नेक हजात को पूरा मंजूर पाना। या अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर पाना और उनके घरों में खैर बरकत नसीब पाना। सहल फसैल या इलाही मुल्क़ाब बिहुरमति सय्यद अल-अबरार, या अल्लाह पाक सय्यद उस्मान शाह साहब को बरकत अता पाना और उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर पा के अजर कसीर और बरकत नसीब पाना। या अल्लाह पाक उनके बच्चों को उनकी अहलिया को बरकत अता पाना। मौला करीम अल जामिअतुज़ ज़हरा के जितने भी मुआमिनीन मुतवस्सिलीन, या अल्लाह पाक उन तमाम की जुमला नेक हयात मकबूल व मंजूर पाना। और जिन जिन अहबाब ने इस जुलूस के सिलसिला में और इस मदरसे के सिलसिला में मस्जिद के सिलसिला में जिस तरीके से भी तावन किया, या अल्लाह पाक उन सबको बरकत अता फरमाना। सहल फज़ल या इलाही कुल्ल क़ाबिल बिहुरमति सय्यद अल-अबरार नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्ला अंत।